Okay, now let's start some questions. अब हम देखते हैं कि vectors के questions पेपर में किस तरह के आते हैं और how to attempt them. Now we will be using everything जो तक अभी तक हमने किया है. See here the question is, it is given that here A, B, C, D is a parallelogram. Make a parallelogram on your notebook. A, B, C, D is a parallelogram. So parallelogram mean opposite sides are equal and parallel. Okay, now usually we know that I can represent a vector AB in the form of a column vector. Mean AB हो सकता है यहाँ पे हो 1 3 column vector 1 3, BC भी हो सकता है, CD भी हो सकता है, AD भी हो सकता है. और आपको कोई अननोन सब BC CD सब वेक्टर दूं और कोई एक अननोन वेक्टर फाइंड करने के दूं तो आप कोई पाथ बना के आप फाइंड कर सकते हैं. But now instead of giving the column vectors, I am telling you कि say the vector AB, I'm going to represent the vector AB with the letter P, small p. And the vector AD, I'm going to represent this with Q. So सबसे पहले तो आप ये P और Q जो given है इसको लेबल करेंगे डायग्राम पे. So if I label this AB vector is P and the direction is important, डायरेक्शन भी लेबल करनी है. पहले जो मैंने डायरेक्शंस बनाई हुई हैं वो सिर्फ पैरेललोग्राम शो करने के लिए बनाई है. तो क्या वही डायरेक्शन है? Yes, I told you that AB is P, so this is the direction of P. And AD is Q, so from A to D this vector is Q. ये हमने लेबल कर दिया in diagram. Now the question is, I will ask different vectors B, C, C, D, A, D, और बहुत से vectors पूछूंगा. And the question will be, you need to write all those vectors in terms of P and or Q. Find in terms of P and slash or Q. I hope you understand what does it mean and or. मीन हो सकता है P और Q की फॉर्म में हो, सिर्फ P की फॉर्म में भी आंसर हो सकता है, सिर्फ Q की फॉर्म में भी हो सकता है, और P एंड Q दोनों की फॉर्म में भी आंसर हो सकता है. Okay, first yes, Shamir, what is vector CB? No, BC. What is vector BC in terms of P and or Q? Yes. You have to tell the vector BC. देखिए जो पैरेलल वेक्टर्स होते हैं, अगर ये वेक्टर हो P, तो अगर ये मैं कहूं कि इसके पैरेलल है और उसकी लेंथ डबल है तो ये वेक्टर क्या होगा? That will be 2P. ऐसा ही है ना. लेकिन अगर एक वेक्टर ड्रॉ करूं बिल्कुल उसकी लेंथ भी इक्वल हो और पैरेलल भी हो तो वो क्या होगा? वो तो P ही होगा. So see, this is a parallelogram. So if it is a parallelogram, BC and AD are parallel and also equal as well. Equal भी हैं, they are equal and parallel. So if vector AD is Q, then what would be the vector BC? That will also be Q. So the vector BC is also Q because opposite lines are parallel in the case of parallelogram and also equal. So if vector AD is Q, then BC is also Q. Next is, can you tell me the vector CD? Yes, Rafe, CD.
minus P, not P. Vectors, direction is very important. वैसे तो जब आप लेंथ कहते हैं तो ए बी और सी डी इक्वल है, लेंथ ए बी की और सी डी की इक्वल है, लेकिन वेक्टर्स जब डिस्कस करें तो वेक्टर ए बी इज इक्वल टू डी सी, नॉट सी डी. सी द डायरेक्शन ऑफ ए बी, ए की बी की डायरेक्शन अपवर्ड जा रही है, तो उधर से डाउनवर्ड अगर आ रहा है तो इट मींस यू आर मूविंग अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ पी. सो इफ यू वांट टू फाइंड डी सी, तो डी सी ए बी ए की बात है, वो तो पी होगा. बट इफ यू आर लुकिंग फॉर सी डी, ये this means you are moving against the direction of p. Vector तो वही होगा, but direction is different, so it will be minus p. So the vector CD is minus p. If all the cameras are on, then I can allow you to unmute whenever you want. Yazdan Rizvi, please turn on your camera. Yazdan Rizvi, please turn on your camera. So you want me to put you in the waiting room. Now you can unmute yourself whenever you want. Okay, next, the question is in the same diagram. What is vector AC? See, there is no line between A and C. इसका ये मतलब नहीं कि वो वेक्टर ए सी पूछ नहीं सकता, आप चाहें तो खुद ड्रॉ कर सकते हैं. जी जी बख्शी. सर अगर वेक्टर वो पूछेगा तो कांट वी डू द डिस्टेंस वाला मेथड, या हम क्यू और पी के साथ नहीं कर सकते? देखिए डिस्टेंस फार्मूला जो है या डिस्टेंस मेथड वो तब अप्लाई करें जब आपको लेंथ ऑफ एसी कैलकुलेट करनी हो. नाउ देखिए किसी वेक्टर को अगर कोई वेक्टर अगर हो, ये वेक्टर है 3 4, और इसकी अगर लेंथ कैलकुलेट करेंगे तो वो लेंथ आएगी √3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर व्हिच इज 5. सो दिस इज लेंथ, 5 is the length of this vector, but vector mean 3 4. So vector अभी आपको बताना, अभी हम लेंथ नहीं डिस्कस करें. So I'm asking for the vector AC. So there is no, AC is not given, so you need to use an alternate path to find AC. Alternate path जो मैं यूज करूंगा, जरूरी नहीं आप भी वही यूज करें. मेरे माइंड में एक alternate path चल रहा है A to D, D to C, बट हो सकता है कि अकबर शहरियार के माइंड में चल रहा हो A to C is A to B, B to C. So the path I'm going to write here is AC is equal to A to D plus D to C. पाथ लिखना जरूरी नहीं है, जैसा मैंने लिखा है, आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, बट क्योंकि अभी हम इनिशियल स्टेजेस में, तो दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग द पाथ. So AC is equal to AD plus DC. So what is AD? Vector AD is Q. What is vector DC? It's P. So plus P, Q plus P, or you can write P plus Q. If you are going through A, B, B, C, that is also fine. At the end, result will be same. So it's all about making the path. What is vector BD? Mr. Fawaz Akhtar. What is vector BD? Fawaz Akhtar. Sir, BA plus AD. Okay, you are telling the path BA, which is right, plus AD, right path, but you need to tell the vectors as well. What is that BA and AD? Sir, BA is P and AD is Q. Yes, it is not positive P. If you are moving B to A, देखें B से A जाते हुए, you are moving against the direction of P, so it should not be positive P, it should be minus P. So minus P, and then A to D is you are moving with the direction of Q, so it will be positive. So minus P plus Q.
minus P plus Q, or you can write Q minus P. So be careful about the directions. Vectors कर रहे हैं आप, direction ही तो important होती है इसमें. Okay, next is the vector CA. Okay, direction बताए बगैर आप direct answer बताते जाएं. CA, Hamza Anwar, how to find vector CA? What will be the answer for CA? Sir, it would be negative Q minus P. You are saying negative Q, negative P. That's what you said? Yes, sir. Yes, you are right. अगर मैं इसको path बनाऊं तो C से B is minus Q and B to A is minus P. So minus Q minus P, or the other way is we already have AC. तो अगर AC है तो CA उसी का साइन चेंज कर दें, minus Q minus P. जी, I hope समझ आ रही है. थोड़ा सा क्वेश्चन मुश्किल करूं. There is a point M here. And further, I'm telling about this point that this M is the midpoint of C and D. M is the midpoint of the line CD. Mr. Onzadi, what is the vector CM? What is vector CM on ZD? G. Dawood. Sir, is that minus P by 2? Minus P by 2. देखिए C to D अगर आएंगे तो negative P होगा. But C से D तक नहीं आना, C से M तक half जाना है. So now simply it's half of P. लेकिन क्योंकि you are moving against the direction of P, so it will be minus half P, or you can say minus P by 2. So because M was a midpoint, मैंने mention किया, यहाँ पे चले मैं label भी कर देता हूँ कि these two are equal. So इसका मतलब M is dividing the whole vector P into two equal parts, half P, half P. When I'm asking CM, so mean you are moving against the direction of P, so it is minus half P. Okay, next is vector AD. Mr. Fateh Alam. What is vector AD? Sorry. AD to given था. I actually wanted to ask AM. Vector AM. G. Fateh. What is vector AM? पता नहीं. थोड़ा सा loud, please. So Q plus 1/2P. Yes, right, Fateh, you are right. So path should be A to M is A to D, D to M. अब A to D क्या है? वो Q है. And D to M is half P. Fateh, it's correct. Q plus half P. Next vector, 8. What is vector MB? Hassan Murtada. MB.
देखिए याद रखिएगा, जब एम बी कहा जाए तो एम से स्टार्ट लेना है आपने, बी से नहीं स्टार्ट लेना, एम से स्टार्ट लें। Okay, you are right, MC, and MC is half P. MC is half P. Then C to B, and what is CB? Sure. Minus Q. So MB is half P minus Q. Any problem? ठीक हो गया? थोड़ा सा और मुश्किल करूं? There is another point on the line BC now. Say that point is here N. And further I am telling you that BN ratio NC is 1:2. It's not the midpoint. BN and NC has a ratio 1:2. अगर BN 1 सेंटीमीटर हो तो NC 2 सेंटीमीटर होगा. अगर BN 2 सेंटीमीटर हो तो NC 4 सेंटीमीटर होगा. अगर BN 10 सेंटीमीटर हो तो NC 20 होगा. अगर BN 10 हो, NC 20 हो, तो फुल वेक्टर BC कितना होगा? अगर BN 10 हो, NC 20 होगा, तो फुल वेक्टर BC 30 हो जाएगा फिर. So ratio is 1:2. ये यहाँ पे मैं ratio लिख रहा हूँ. ये 1 अगर मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ पे 2 लिख रहा हूँ, doesn't mean कि 1 is the length and 2 is the length. It's simply the ratio. It is telling if BN is 1, then B and C would be 2. और full BC vector क्या होगा फिर? 3. Okay, now who will tell me the vector BN? Fawad is saying it's 1/4. And कुछ कह रहे हैं जी बख्शी. Sir, 1/3 P नहीं आएगा, 1/3 P. 1/3 Q, 1/3 Q, 1/3 Q, sir. 1/3 Q. You are right. देखें जो BN पार्ट है, BN वाला पार्ट, ये पार्ट, ये 1 पार्ट है, ये 2 पार्ट्स हैं, और टोटल कितने पार्ट्स हैं? टोटल 3 पार्ट्स हैं. आपको BN को कंपेयर करना है टोटल के साथ, क्योंकि टोटल P वेक्टर है ना, टोटल फुल वेक्टर P है. फुल वेक्टर P है तो ये BN उसका कौन सा पार्ट है? ये उसका 1/3 है. So BN is 1/3 of total, whereas NC is 2/3 of total. So BN is 1/3 of total and NC is 2/3 of total. So in that case, BN would be 1/3 of total. And what is total? Vector Q. So BN is 1/3 Q. What will be the vector CN? Vector CN. G. So CN means it's a 2/3 of total. 2/3 एक तो हो गया, और डायरेक्शन क्या है? Q, 2/3 of Q, लेकिन डायरेक्शन you are moving against the direction of Q, so -2/3 Q. So Cn is -2/3 Q. This is your vector Cn. 11th, next is you need to tell the vector Bn. Sorry, Bn हो गया? ओ अच्छा, वो नहीं. Oh, sorry, DM, DB, DN, sorry. DN. You need to tell the vector DN. Here is the diagram, DN. पाथ अगर कोई D से N इधर से जाता है
और अगर कोई इधर से जाता है, एट द एंड दोनों के आंसर्स इक्वल होने चाहिए और आएंगे भी इक्वल। लेट्स सी जी, व्हाट इज DN? व्हिच पाथ वुड यू प्रेफर? DC, CB? और अगर दूसरी तरफ से जाएंगे तो 3 पास बन जाएंगे, DA, AB, BN। तो आएगा आंसर फिर भी से। ओके, यस, you are saying P minus 2 by 3Q. Yes, you are right. P, देखते हैं। So D to N जाना है, तो इन्होंने क्या किया, D to C, which is positive P. D to C is a positive P and C to N is negative 2/3 Q, जो कि अभी पहले किया। अगर कोई दूसरे वे से करता है तो उसके 3 वेक्टर्स आएंगे, उन मतलब Q के 2 वेक्टर्स आएंगे, उनको फिर आगे सिंप्लीफाई करके फर्दर आपका फाइनल आंसर यही बनेगा। Last part of this question, you need to find NM. NM. Vector NM. Yes, Bakshi. सर हम पाथ जो मैंने लिया है वो है N to C और फिर C to M, और N to C होएगा 2/3 Q और फिर हमें पता है ये माइनस P होगा, 2/3 Q minus P। Yes, so N to C is 2/3 Q and C to M is half P, but against the direction of P, so minus half P. So it is NC is 2/3 Q minus half P. Ji, is that clear? Next question करते हैं, आप इस डायग्राम को छोड़ देते हैं। We have another parallelogram. PQRS. It is given that PQRS is a parallelogram. Further, it is given that T is the point here on the line PS, and it is given that PT ratio TS is 3:2. There is another point U, which is given here. This is a point U such that PU ratio UQ is given 3:1. Further, it is given that PQ vector is A. I'm going to represent the vector PQ with the letter A, and the vector RQ with the letter B. So now you have to find number 1. Find number 1. You have to find SU. Number 2, you have to find QT. Third, you have to find TU. These are the vectors you need to find. जी, please start instructions. कि पहले PQ is equal to A और RQ is equal to B को आप डायग्राम में लेबल कर लें।
और मैंने ये आपको बताया है कि PQRS is a parallelogram. This is given. ये जो इंफॉर्मेशन मैंने दी है PQ is equal to vector A, RQ is equal to vector B, इसको डायग्राम में लेबल करें विद डायरेक्शन, फिर आपने क्वेश्चन स्टार्ट करना जी। someone was asking something. Okay, no. Okay, start this. Give me 2 minutes. I'm coming back. ये जो आंसर ऑलरेडी चैट में है ये पहले वाली है, सही हो।
जी, 2 participants. जी अबू बकर. एस टू का है बी प्लस 3/4a। जी अबू बकर कह रहे हैं कि एस यू है b प्लस 3/4a. जी सर। ओके, b प्लस 3/4a. किसका आंसर, प्लीज हैंड्स डाउन, किसका आंसर इससे डिफरेंट है? बख्शी हैज अ डिफरेंट आंसर. यस बख्शी, व्हाट्स योर आंसर? सर मेरा एक्चुअली इज -b+3 है 3/4 है। चले मैं इसको करता हूँ, फिर बता देखते हैं कि किसका ठीक है. पहले तो मैं क्या करूंगा कि आई विल लेबल दिस इंफॉर्मेशन. पी क्यू इज गिवन वेक्टर ए. सो ये पी क्यू वेक्टर ए है और इसकी डायरेक्शन में जरूर लेबल करूंगा. यही वो चीज है जिसकी मैं मिस्टेक करूंगा. तो डायरेक्शन पहले लेबल कर लें. एंड आर क्यू इज गिवन बी. दिस वेक्टर इज बी और ये आर क्यू है, मीन दिस वे. तो इट्स अ पैरेललोग्राम, तो ऑपोजिट सारे फिर इक्वल होंगे. अब जो रेशियो पी टी रेशियो टी एस, उसको मैं थोड़ा लेबल कर लेता हूँ 3:2. ये देखिए मैं अपने लिए यहाँ पे 3 लिखता हूँ, अपने लिए यहाँ पे 2 लिखता हूँ. इसका ये मतलब नहीं है कि ये लेंथ 3 है और वो लेंथ 2 है. रेशियो उनमें 3 है और 2 है. ओके, हैंड्स अप हो गए. सो पी यू एंड यू क्यू, पी यू एंड यू क्यू इज 3:1. सो 3 and 1. ये रेशियोज है, मैं बार बार रिपीट करूँ, ये लेंथ नहीं है. तो अगर मैं सिर्फ पी टी कहूं तो पी टी इज 3/5 ऑफ टोटल. ऐसे ही है ना, टोटल 5 है, पी टी इज 3 है. सो पी टी इज 3/5. व्हाट इज टी एस? 2/5. 2/5 ऑफ टोटल, 2/5. और अगर उधर बात करें पी यू अगर 3 है, यू क्यू 1 है, तो टोटल 4 हो गए. तो क्यू यू क्या होगा? 1/4. और पी यू क्या होगा? 3/4. आई होप ये रेशियो इस तरह बनानी आती है. ये टोटल के साथ कंपैरिजन आप करते हैं. 1/4, 3/4, 3/5, 2/5. Now, if you are looking for SU, so path for SU should be S to P. What is S to P? It's positive B. Because SP is same as RQ, so it's positive B. Then PU is 3/4 of A and positive, so 3/4A. Yes, you are right, Abu Bakr. Okay, second vector QT. Minus A minus 3/5B. Minus A minus 3/5B. Who is getting a different answer other than minus? आपका भी यही है, सबका ये. चलें देखते हैं क्यू टी. क्यू से जाना है टी तक, क्यू टू टी जाना है इधर, ये. So the alternate path I will use is Q to P, and QP is minus A. Then P to T, PT is 3/5 of B, but we are moving against the direction of B, so minus 3/5B. TU. TU, let me ask Noman Zafar. Noman Zafar, what is TU? Sir, I didn't do this one. So you haven't done that. तो अगर आपको टाइम दें तो हम आपका वेट कर लें, क्या क्या कहते हैं? होगा ही नहीं. वेट कर ले, मैं शायद कर पाऊँ. चलें वेट करते हैं. पाथ बताएं क्या बनेगा? पाथ, पहले पाथ बताएं मुझे. टी से यू तक 9:15 पे क्लास ओवर होती है, 9:10 पे. जी पाथ नोमान जफर बहुत सिंपल है इसका. टी टू पी आएंगे और पी टू यू जाएंगे. नोमान सिर्फ ये बताइए व्हाट इज वेक्टर टी पी?
It would be minus Sorry? a. देखें TP? TP 3 पार्ट्स हैं, TP 3 पार्ट्स है और फुल कितना है 5 पार्ट्स हैं. So TP would be minus 3 3. over 5 a. Why did you put minus here? Oh wait, it's going on the right direction, so it's 3 over 5 b. Yes, you are moving with the direction of B, so it should be positive. So it is positive, so TP would be positive 3 by 5B. Now you need to decide about PU. B over 4a. Yes, it is 3/4 A, so 3 by 4 A. इसी में मैं कुछ और एडिशन करने लगा हूं. यहां पे एक वेक्टर है, एक पॉइंट है, इनफैक्ट V. This is the point V, such that here I'm going to write the relation. और वो कहाँ लिखूं मैं? The relation is RV is equal to 1 by 3 RS. RV is equal to 1 by 3 RS. रेशियो क्या बनी RV और VS में? What's the ratio between RV and VS? देखिए, ये अगर मैं यहाँ पे अलग से यहाँ लिखूं दोबारा, RV is equal to 1 by 3 RS. If I shift RS on the other side, तो RV over RS is 1:3. So RV और RS में जो रेशियो है वो 1:3 है. मीन अगर RV 1 हो तो RS would be 3, full 3 होगा. तो VS क्या होगा फिर? वो 2 होगा ना फिर. ऐसा ही है, वो 2 होगा. नहीं देखें, RV और RS में रेशियो जो मैंने बनाई है यहाँ पे 1:3 बनी हुई है ना. मतलब कि इसका मतलब ये है कि RV अगर 1 हो तो फुल RS कितना होगा? RS लिखा हुआ है यहाँ पे, RS फुल वेक्टर 3 है. अगर वो 1 है और फुल 3 है तो VS वेक्टर कितना बना? VS बना 2. फिर ये बात समझ आ रही है? सो इसका मतलब आपको थोड़ी सी डिफरेंट वे से रेशियो दी होगी तो आपने खुद रेशियो बना सकते हैं आप. सो इफ RV is equal to 1 by 3 RS, so it means RV ratio VS is 1:2. Now last our point is, what is vector VU? Make a path for VU. जी बख्शी. Yes. Sir, I think होएगा 1 by 3a plus b minus 1 by 4a. Yes, you are right. But remember ये final answer नहीं है. जी सर, फिर हम like 1 by 4 और 1.3 का डिनोमिनेटर लेके, I mean like LCM लेके कुछ कर सकते हैं, like इनको एक फ्रैक्शन. बख्शी ने ये वाला पाथ बताया है, ये वाला. आप में से हो सकता है कोई नीचे की तरफ से जा रहा हो, बट एट द एंड आंसर वुड बी सेम. सो VU पहले VR करेंगे और VR क्या है? 1/3 of A. What is RQ? RQ is B. And what is QU? QU है आपका 1/4, but you are moving against A, so minus 1 by 4A. So आप, क्योंकि ये फाइनल आंसर नहीं, क्योंकि लाइक टर्म्स आ रही हैं इसमें, आपने 1/3A और minus 1 by 4A मीन एलसीएम ले लें यहाँ पे कि 1/3 minus 1 by 4 कितना होता है? Sir, 112A over plus B. 1/12. 1/12A plus B. Or here, yes, 1/12 बन जाता है.
सो वो आप लिख सकते हैं 1/12a. So 1/12a plus b. This is the vector VU. Is that clear? So now we have done almost 80% of the vectors. अब हम कुछ क्वेश्चंस पास पेपर की भी कर सकते हैं और जी प्लीज बताइए. ये ऐसा नहीं हो सकता, कैलकुलेशन मिस्टेक होगी. लेके आए इधर मेरी तरफ. जी थैंक यू सो मच. सी यू टुमारो इंशाल्लाह. आई थिंक टुमारो और डे आफ्टर टुमारो. टुमारो. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज. लेके आए इधर.